हाय गाइस, दिस इज सोफिया चांद फ्रॉम गर्ल्स बस। हम लाते हैं आपके लिए ऐसे वीडियोस जो वुमेन्स लाइफ से रिलेटेड होते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। In today's video, we will discuss what rights the Indian Constitution offers a woman who wants to file a divorce or is already filing one. मोस्टली किसी को इन सभी लॉज के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, जिसके कारण कुछ तो डिवोर्स फाइल करने का ख्याल ही छोड़ देती हैं। उन्हें लगता है कि डिवोर्स फाइल करना एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसीजर है, जो सच भी है, और इसके कारण वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस के रह जाती है। Divorce can really be challenging and emotionally draining process for everyone involved, especially for women. Women still suffer from innumerable challenges when it comes to a divorce. इसीलिए बहुत जरूरी है कि women अपने legal rights को समझे, ये समझे कि किन grounds के basis पर वो divorce फाइल कर सकती है, और साथ ही साथ child custody और property rights के बारे में समझ सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप किन रीजंस के बेसिस पर एक डिवोर्स फाइल कर सकती है। फर्स्ट, क्रूएल्टी। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को फिजिकली या मेंटली हैरेस करता है, देन द वाइफ कैन फाइल अ डिवोर्स। सेकंड, अडल्ट्री और चीटिंग। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को चीट करे, द वाइफ कैन फाइल फॉर अ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बीइंग अनफेथफुल इन द रिलेशनशिप। Third, desertion. If the husband abandons his wife for at least 2 years without any reason, the wife can file for a divorce. Fourth, mental or physical incapacity. अगर हस्बैंड मेंटली या फिजिकली एक ऐसी स्टेट में है जो उसके साथ वाइफ को रहने के लिए इम्पॉसिबल बनाए, then the wife can file for a divorce. If the husband suffers from STDs, then too a wife can file for a divorce. Presumption of death. If the husband has been missing for 7 years, the wife can presume him to be dead and file for a divorce. Conversion. If the husband decides to convert to another religion, then the wife can file for a divorce. इसके अलावा इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स के अकॉर्डिंगली देयर आर सम स्पेशल डिवोर्स लॉज फॉर विमेन। Hindu religion, under section 13(2) of the Hindu Marriage Act, a Hindu wife can also decide to take a divorce if her marriage was solemnized before she turned 15 and she refused to accept it after turning 15 but before turning 18. अगर कोर्ट की तरफ से मेंटेनेंस ऑर्डर्स जारी कर दिए गए थे, बट स्टिल हस्बैंड एंड वाइफ एक साल तक इकट्ठे नहीं रह रहे हैं, इट मेक्स द वाइफ एलिजिबल टू फाइल फॉर अ डिवोर्स। Muslim religion, li'an talaq. If a husband accuses his wife of adultery, but his charges are proven wrong, or he decided to retract his oath in court, it makes the wife entitled to take a divorce. Talaq-e-tafweed. If the husband pronounces a divorce to his wife through a written agreement, the wife has the right to initiate divorce proceedings in court. The husband, however, retains the right to revoke the delegation of power at any time before or after the divorce is initiated. Khula. This type of divorce is also called divorce at the instance of a wife. The wife can seek divorce by returning her dower, which is meher, to her husband or by agreeing to forego it. However, this form of divorce requires the husband's consent. आइए अब बात करते हैं कि with respect to a divorce, what legal rights does a woman have? Number 1, maintenance and alimony. A wife is entitled to claim maintenance charges from her former husband, पर अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ पेमेंट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि अगर आप खुद फाइनेंशियली सपोर्टेड है, आपके फॉर्मर हस्बैंड की पे करने की एबिलिटी क्या है, एंड शादी के दौरान आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड क्या रहा था। अगर एक वर्किंग वुमन फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हो, तो वो एक हायर एलिमनी या मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। मेंटेनेंस अमाउंट पर कोई लिमिट नहीं लगाई गई है, आप चाहे तो आप जीरो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती हैं, मीनिंग दैट यू डू नॉट वांट एनी मनी फ्रॉम योर हस्बैंड फॉर योर मेंटेनेंस और दैट ऑफ योर चाइल्ड्स। However, the court takes into consideration various factors such as the earning capacity of both the spouses, the needs of the woman, the standard of living during marriage, and other relevant factors. Number 2, child custody. कोर्ट एक बच्चे की कस्टडी कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करती है। While a woman can claim the custody of her child, कोर्ट पहले ये जज करती है कि बच्चे का फ्यूचर एंड प्रेजेंट किसके साथ ज्यादा सिक्योर है। If the child is below the age of 5, a woman has the right to claim the full custody of the child. Courts in India generally consider the welfare of the child when deciding custody arrangements.
In many cases, custody is awarded to the mother, particularly for young children. However, custody battles can be emotionally draining and legally intricate. Number 3, property rights. इंडिया में व्हेन अ कपल गेट्स मैरिड तो हस्बैंड एंड वाइफ का किसी भी प्रॉपर्टी पर बराबर हक होता है। अगर वाइफ डिवोर्स के लिए अप्लाई करती है तो वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी क्लेम कर सकती है। प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड बोथ प्रॉपर्टीज एंड कार्स ओन्ड बाय द कपल। सबसे पहले आती है जॉइंटली अक्वायर्ड प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी शादी के एग्जिस्ट करने के दौरान बनाई या खरीदी गई हो, उस पर हस्बैंड और वाइफ दोनों का इक्वल हक होता है। इसमें सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बट मनी, गोल्ड और घर का बाकी सामान भी गिना जाता है। डिवोर्स के दौरान हस्बैंड को वाइफ को उस प्रॉपर्टी में हक देना पड़ता है एंड अगर द हस्बैंड रिफ्यूजेस टू डू सो, कोर्ट उन सब प्रॉपर्टीज को सेल पर लगाने का ऑर्डर दे सकती है, जिससे जो पैसे मिलेंगे वो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में स्प्लिट किया जाता है। दूसरी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अगर हस्बैंड के पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो उसकी फैमिली में जनरेशंस बाय जनरेशंस पास ऑन की गई है, तो उस पर वाइफ का कोई हक नहीं है। कोई भी वाइफ अपने फॉर्मर हस्बैंड की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कोई राइट या क्लेम नहीं कर सकती है। और लास्ट है मेंटेनेंस, जिसके बारे में हम डिटेल में बात कर ही चुके हैं। कोई भी वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपनी डेली नीड्स और अपने बच्चों की नीड्स को पूरा करने के लिए। पर यह ध्यान में रखिएगा कि प्रॉपर्टी स्प्लिटिंग का डिसीजन किस स्टेट में डिस्प्यूट रेज हुआ, लेंथ ऑफ द मैरिज, हस्बैंड वाइफ दोनों की अर्निंग्स एंड स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस पर भी डिपेंड करती है। नंबर 4, स्त्रीधन। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि शादी के बाद कुछ दिन में आपसे कहा गया है कि आप सारा दे दो, हम सेफ रख लेंगे? इंडियन लॉज के मुताबिक स्त्रीधन पर सिर्फ और सिर्फ लड़की का हक होता है। नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम हर। कोई भी गिफ्ट्स या वैल्यूएबल आइटम्स जो आपको आपके मैरिज के टाइम पर मिले थे, उन्हें स्त्रीधन माना जाता है एंड डिवोर्स के टाइम पर आप अपना स्त्रीधन वापस ले सकते हैं। अगर आपसे आपका स्त्रीधन छीना जाता है तो आप लीगली केस भी फाइल कर सकती हैं। नंबर 5, राइट टू रीमैरी। कोई भी वुमेन डिवोर्स के बाद दोबारा शादी कर सकती है, बट बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 90 days बिफोर टाइंग द नॉट विद सम अदर पर्सन। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू शुड कीप इन माइंड। Legal process. Divorce proceedings in India involve legal steps including filing a petition, attending hearings, and presenting evidence. Women can seek legal representation to ensure their rights are protected throughout the process and that their side of the case and situation is well presented in the court in order to ensure a fair judgment. Challenges and societal factors. Despite legal provisions, women in India may face challenges when pursuing a divorce. Social stigma, family pressure, lack of financial independence, and lengthy legal processes can discourage women from exercising their divorce rights. Divorces can be emotionally and mentally draining, especially for women in India. Recent changes. In recent years, efforts have been made to simplify divorce procedures and make them more gender neutral. The introduction of online divorce application systems and the recognition of the irretrievable breakdown of marriage as a ground for divorce have aimed to make the process smoother. Many organizations and NGOs provide legal assistance and support to women seeking divorce. These resources can help women navigate the legal complexities and advocate for their rights. What is the conclusion? Divorce rights for women in India have come a long way, but challenges remain. While the legal framework supports women's rights to seek divorce, societal norms, financial dependence, and legal complexities can hinder the process a lot. Empowerment, awareness, and access to legal resources are essential for ensuring that women can exercise their divorce rights and make choices that are in their best interests. Hopefully this video was informative for you. If you found this video helpful, do like, share and subscribe to our channel and hit the bell icon to never miss an update. You can also refer to the legal series in our Girls Buzz YouTube channel to know more about your legal rights as a woman in India. Take care and goodbye.